Good morning and welcome to today's session on significance of prior art while filing your IP. As you know, the NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup for IGNOU students and faculty, covering different topics of common interest. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 48th session in this series, titled Significance of Prior Art While Filing Your IP, is being organized today. To discuss this topic, today we have with us Dr. Sapna Gambhir, and it is my pleasure to introduce her to you. Dr. Sapna Gambhir is Associate Professor of Computer Engineering Department and Vice President, Institutions Innovation Council of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad. She has completed her doctorate in computer engineering from Jamia Millia Islamia, Delhi in 2010. She has more than 19 years of experience in academics and research and development. Her team has been awarded Lilavati Award 2021-22 under Women Innovators Rural Urban sub-theme by AICTE. She has been awarded the Best Teacher Award in the year 2020 and the Best Woman Scientist Award under Research Excellence and Academic Awards in 2018. She has published more than 100 research articles in peer-reviewed journals and conferences. 3 patents, out of which one is with USPTO and 2 are in Indian Patent Office, have been granted. More than 5 ideas are filed for patents. She has already guided many PhDs successfully as a sole supervisor. She has also participated in the UK IERI 2019 Leadership Program, which is a collaborative initiative by the Government of UK and India. She is a principal investigator of many research projects related to the sustainable environment of government organizations. Being an innovation ambassador of the Ministry of Education, she puts her best efforts to develop a strong innovation ecosystem. I welcome you, Dr. Sapna Gambhir, to today's talk. Thank We you, ma'am. Thank you also so have with much. us Dr. Thanks. Umika Sharma, Director NCID. Before I invite Dr. Sapna Gambhir, I would request Dr. Sharma to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita, and good morning to all for this 48th session of Facebook Live on innovation and startup. And we are really thankful to Dr. Sapna Gambhir ji that she has agreed again to deliver a talk. So I welcome you also for this session. And I hope this session on that significance of prior art while filing IPR may be very important, because these terms like prior art may be very new to the students, so they will be able to understand what is the meaning of this prior art as far as this IP filing is concerned. Because only few days back we had a session on IP filing and other procedures for the mentee institutions. There was a very detailed discussion on this, and many issues came there also. But we felt that this kind of sessions should be for the general students also, for all the students. And we are fortunate to have you, that you will be discussing on such a very important topic, which now after few years we have seen that many of our students now are in these stages of filing their patent. They are always asking how to protect our idea or innovation or whatever they have developed. So I think in that context, today's session will be very important. Uh, Many students are very keen to know about the procedure, also the terminology, and what kind of precautions one should take, and what are the difficulties and challenges also in this context. So what is the significance of these all in this context? For that purpose, I think session will be very useful. We are really thankful to you. So I also welcome all the participants who have joined us through Facebook Live as well as YouTube Live, and hopefully some more our colleagues from regional centers and others will join through the Google Meet also. So thank you very much to all of you.
So Sonamji also has joined. Thank you, Sonamji. We were talking about you. So Dr. Momita, you can take it now further. Thank you, Dr. Sharma. So now I invite Dr. Sapna Gambhir to present her talk on the topic Significance of Prior Art while Filing Your IP. Dr. Sapna, please. Thank you so much, ma'am. Thank you for such a kind introduction. And thanks, OP Sharma sir, for inviting me. I'll try my best to cover all the concepts which sir has mentioned in his talk. Um, Ma'am, can I share my lapis screen? Hello? Ma'am, Yes, can I share please. my Yes, lapis please. screen? Yes, Yeah. Thank you. yes, please. Ma'am, it would be great if you can confirm, is it visible? My screen is, lapis screen is visible or... Yes, Dr. Sapna, it is. Yeah, yeah. Thank you so much, ma'am. So the topic for today's discussion is significance of prior art while filing your IP. If I'm talking about IP, it means my main concern is talking about the unique idea, talking about the thing which you can commercialize in the market as well. As we are talking about the innovation IP, it means innovation plus the commercialization factor. And the picture of some wristband which you can you can see in this PPT, will discuss about this device during my talk. And this is the, you can say, outline for today's discussion. We'll start with the start journal, the basics, what actually the intellectual property is and how it is very much different with the real property. If we are talking about the characteristics of IP, then what can be the various categories of IP? Here I'm talking about the patents, specifically for the patents during our talk. And then patents, what are the patents, what can be the legibility criteria of the patents, what different categories are there for which we can't apply for the patents. Patent means the patentability criteria in India. Then I'll discuss my few patents that are granted to me, and I have filed the application for that as well. I'll discuss that thing. And then for any new idea, how can you search? That is a prior art searching for your idea, whether this is a new or an existing one. What can be the procedure for that? And so at the end, some interesting facts about that. This will be the outline for our talk for today. Now, I'm starting with how the intellectual property is different from the real property. If I'm talking about the intellectual property, two words are there. One is the property and second is the intellectual. The property means my owners, my possession, means if I'm talking about the real property means the property. Suppose this laptop, this is my property. This home, this is my property. If I'm talking about the car is my property. If I relate this property with the word of intellectual property, the meaning is same. Means in case of an intellectual property, the meaning of property is my possession, and in case of real property, again the meaning of property is my possession. But now, what is the difference between these two terms? Now, the difference lies between the term intellectual and real. Intellectual means the result from your creative labor. I'll discuss this term later on in my later slides. I'll start with the real property. Real means the thing which you can see, means the tangible one. And in case of IP, intellectual property, that is an intangible one, means my idea, my solution to a problem. All that thing is in my mind, my picture, but that is not as a physical component in the market till now.
That is my intellectual property. But if I'm talking about the real property, as I said, my laptop, my chair, my, you can say, flat, all these have the physical boundaries. Like my home is of 250 square feet, square yards, or the 1000 square yards, something like that. If I'm talking about the physical boundaries, it means depending on, suppose I'm having a flat of 3 bedroom flat or a 4 bedroom flat, something like that. It means there is some boundaries, there is some restrictions that how many persons can accommodate in that 3 bedroom home. Means after some threshold, if you can say, I include more number of people, then there is a chance of suffocation at that time. But this doesn't happen in case of a intellectual property. Means if I have one intellectual property right, so it means there is no restriction on how many number of users can use that. I have a position of that. I am an owner of that. I am a decision maker of that. But if I float that solution or that thing in the market, then n number of persons can use that. That is a major difference between your intellectual property and real property. Similarly, if I'm talking about the public property and private property, same. If I'm talking about the public property are the transports, metros, railways, buses, all that are the public property. Anyone, any person or any citizen of India can use that freely without, you can say, misuse that property. And for the private property, I'll be the decision maker. For my property, I'll be the decision maker. And intellectual property, as I discussed. Now, if we are talking about the intellectual, that is, the inventions are the product of creative human labor. Intellectual effort can't be perceived by others. It's something like that. If we are talking about, you can learn the things, but in order to learn the skill of some other persons, it will take more time than the usual one. That is an intellectual property. In a general sense, if I say, अगर माइंड में मेरे कोई आइडिया है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ माई क्रिएटिव ह्यूमन लेबर. जस्ट थिंक अबाउट एन आइडिया. फर्स्ट टाइम जिस पर्सन ने कुर्सी बनाई थी, उसने कैसे सोचा होगा? हाउ, व्हाट कैन बी द, यू कैन से, स्ट्रक्चर. चेयर जो है उसकी एक लेग हो सकती है, 2 लेग्स हो सकती है, 4 लेग्स हो सकती हैं. हाउ कैन आई, बैलेंस चेयर का बैलेंस मैं कैसे करूंगी? जो पर्सन बैठ रहा है, व्हाट कैन बी द सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन? कभी ऐसा तो नहीं है बैलेंस गिर जाएगा चेयर से, वो पर्सन गिर जाएगा. फर्स्ट टाइम जिस पर्सन ने ये डिजाइन तैयार किया होगा, वो उसका क्रिएटिव ह्यूमन लेबर था, माइंड उसका वो था. एंड दैट पर्टिकुलर आइडिया इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन. बट उसके बाद वो मार्केट में आया, एन नंबर ऑफ कारपेंटर्स आर यूजिंग दैट आइडिया, उसे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. That are not IP persons. That are the persons who are doing the physical labor only. That's it, nothing else. Similarly, आज की डेज में अगर मैं डिजाइनर हूँ, इफ आई एम अ डिजाइनर, अगर मैं किसी एप्रल का, किसी सपोज मैं अपने सूट कुर्ता या किसी शर्ट के लिए भी डिजाइन तैयार करती हूँ, दैट इज अ डिजाइन पेटेंट, डिजाइन एप्लीकेशन, फाइन. बट द लेबर, द वर्कशॉप पर्सन और द, यू कैन से, टेलर्स जो स्टिचिंग कर रहे हैं, जो डिजाइन्स बना रहे हैं, वो उसका पोजेशन नहीं ले रहे हैं. दे आर जस्ट डूइंग दैट एज पर माई इंस्ट्रक्शंस. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस इंटेलेक्चुअल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल, पोजेशन किसके पास आएगा? दैट मैटर्स अ लॉट. One person have the possession of this particular creative human labors, and others are just obeying or follow the instructions. And expressions of ideas can be protected. They can be, if I'm talking about the design, through design application. If I'm talking about the technology part, it can be protected through the patents. If I'm talking about what actually the intellectual property is, it may include your original ideas, your research results, means your analysis part, critical business information, that can be included in the trade secrets. IP is a result from creative human labor, as we said. It is very much different from the real property.
Inventions are protected by the patents. If I'm talking about the inventions, it means I'm talking about the technology part. Or the literary work can be protected by the copyright literary work, or you can say about the softwares, lines, and other things. It means, in the nutshell, we can say the intellectual property rights are the exclusive rights over the property of mind or intellect. This is some one example where I want to differentiate the real property and the intellectual property with the same example. On the screen, you can see a car. Fine. At the upper half, the example of real property, or the, you can say, the features or the characteristics of real property are there, and at the lower half, the properties, services, or the features of intellectual property is given. If I'm talking about the real property, it means I am an owner of this car. I can sell it, I can buy it, I can rent out it, I can lease it, or I can decide who can use my car, who can't, or I can drive it. But if I'm talking about the intellectual property, it means the technology on which, or the car which is using for its running, I'm an owner of that. That's why I can use, or I can decide this technology, who can use this, who particular manufacturer can use this technology in order to launch their car, new model in the market. Or I can go for the license in, license out also. Or I can restrict, if I am having a patent, I am having a intellectual property rights for this technology, I can restrict other manufacturers for use my technology for their commercialization benefit. This is a difference between a real property and an intellectual property. Or if I'm talking about the aesthetic look and feel of this car, that comes under the design application. IP characteristics. Obviously, if I'm talking about the IP characteristics, or if I'm having a intellectual property rights or the possessions, it means my particular idea, my particular solution is protected by law. If anybody wants to use that idea, use to that, you can say, solution without my permission, that I can go to court against that person. Patents are the results of group efforts and the intellectual efforts in order to create the rights. That's right, very true. And then the characteristics which is mentioned is easily replicated. Any IP, you can say, it's very difficult to create the first copy of anything. That can be a car, that can be a, you can say, software, that can be any physical component as well. Very difficult to create the first copy. Means, if I take total 100% time to develop the 100 copies of one thing, you can say the 90% time for the first copy and other 10% time for the rest of the copies. Obviously, uh, we took right from the government for my idea, for my idea solution, only for the commercialization purpose. If my idea is having any commercial value, then I'll go for the patent applications and other things. Non-excludable means, though I am an owner of my intellectual property, my intellectual idea, but I can't restrict some categories of the users to use that for use for their purpose, not for the commercialization purpose. Means use as a customer, not as a manufacturer or for the commercialization objective. That is non-excludable. Then, this is, you can say, few categories under which we can put our ideas for the IP. Intangible investments, similarly, आज मेरे पास आइडिया है, I can't see whole things that is on in my mind or just in the form of design on papers, but that is not present physically in my surroundings or in my society. That is the intangible. That is very true. Short term,
बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, मालूम नहीं वो चीज़ मटेरियलाइज होगी या नहीं होगी। आज मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं उस आइडिया को मैंने क्या किया, फिजिबिलिटी स्टडी कर ली उसकी, डिज़ाइन थिंकिंग मैंने फ्रेमवर्क अटैच कर लिया, उसमें चेक कर लिया, यूज़र फीडबैक मैंने ले लिया, बट स्टिल आई एम इन्वेस्टिंग द मनी फ्रॉम माई साइड, मैं अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करती जा रही हूँ, मुझे बैक एंड पे कुछ नहीं मिल रहा है, बट एक बार वो सारा मटेरियलाइज हो गया, मैंने ये कह लीजिए आईपी के लिए अप्लाई कर दिया, आईपी मुझे ग्रांट हो गई। नाउ इफ द मैन्युफैक्चरर्स और द मार्केट इज इंटरेस्टेड फॉर माय सॉल्यूशन, देन फ्यूचर नोस और द गॉड नोस मुझे कितना बेनिफिट उस चीज़ का हो पाएगा, जो कि हम आज की डेट में सराउंडिंग्स उसमें देखते हैं। उस चीज़ के छोटे छोटे एग्जांपल्स नेक्स्ट कैटेगरीज में लूंगी, जिस चीज़ को शायद हम सोच पाएंगे कि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या उन लोगों ने सोचा था कि क्या इतनी सारी रेवोल्यूशन हम लोग करंट उसमें इस टेक्नोलॉजी से ला पाए होंगे। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम पिकिंग द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, समथिंग लाइक आई एम पिकिंग द वर्ड टेस्ला हियर। अभी तक हमारे पास जितनी भी व्हीकल्स थे, वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, है ना। आज से 10 ईयर्स बैक अगर किसी ने सपोज कीजिए इस चीज़ का माइंड में सोचा हो कि हाँ ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, रिसर्च इज गोइंग ऑन, उस टाइम पर कोई भी पर्सन पेट्रोल पंप ले रहा था, पेट्रोल पंप में डीजल का है, पेट्रोल का है, उस टाइम पर अगर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए सोच रहा था तो ये था इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मालूम नहीं ये चीज़ मटेरियलाइज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट today's scenario is very much different than that of a 10 years back scenario. These type of ideas can come under the new technological ideas. If I am talking about the new product design, you can think of any product, any, you can say, any Samsung phone, any iPhone, or any other brand phone, or the laptops, anything. If I'm talking about the new business models, as I think almost all of us are using the features or the services of Swiggy, Zomato, or you can say Ola, Uber. Have you think about these type of services 5 to, you can say, 7 years back? उस टाइम पर क्या होता था, इफ आई वांट टू गो समवेयर तो मुझे फुल डे के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ती थी। द वन थिंग, फुल डे की टैक्सी का एक अपना चार्ज था, 1000 रुपीज प्लस दिस मच ऑफ आवर्स। If the night stay is there, the driver will took this much of money for the night stay also. But now, if I want to go somewhere which is just you can say 5 to 6 kilometers apart at distance from my home, even then I can took the Ola Uber. Or charges kya? Only 100 rupees, 125 rupees. That's it. Or even sharing options are also there. More than one person can share the you can say Ola Uber facility, or the Ola autos and others are also there. Similarly for the Zomato, Swiggy, कभी सोचा था तो सबसे पहले क्या देखते थे, हाँ उस पर्टिकुलर उसका ना आज मुझे हल्दीराम्स का ये खाना है, क्या हल्दीराम होम डिलीवरी करता है? If the Haldiram is providing this facility, then it's okay. Otherwise, no option was there. I have to go there, just pack the things and come back home. But आज क्या होता है? Doesn't matter. अगर उसके पास नहीं भी है, if that particular eating you can say eating outlet or food outlet is not giving this type of facility, no issues. I'll hire Zomato or Zomato and Swiggy for this service. मतलब all just like Paytm also. क्या हम लोगों ने पेटीएम आज से मतलब इन मैं जनरल सेंस बात करूं तो आई थिंक पेटीएम और यूपीआईज हैं, पेटीएम्स हैं, बाकी जितने भी आपके मनी ट्रांसफर वो हैं, सबसे ज्यादा हमने कब यूज किए, कब हमें उनकी इतनी इंपॉर्टेंस पता लगने लग गई? एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करती हूँ, आई यूज दैट actually used that facility during the time of the demonetization. Before that, I think many of us were using that cash and other services. That's it. बहुत कम, बहुत रेयर यूज करते थे। आज की डेट में आई थिंक जब हम लोग घर से निकलते हैं कभी हम माइंड में नहीं सोचते हैं मेरे वॉलेट में पैसे हैं नहीं है, डजेंट मैटर ना, आई हैव माय मोबाइल फोन, दैट्स इट। मोबाइल फोन है ना तो सब कुछ हो ही जाएगा, तो no need to carry that heavy cash wala wallets and other things.
All these are the, you can say, बिल्कुल जिसने टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों को चेंज कर दिया है, all these are the categories of that. And this codified information is very much related to authentication, authorizations, or you can say social platforms, just like the LinkedIn is there, or Facebook is there, Insta is there, and other many, Snapchat and other things, which uh, every social media platform has its own objectives. If I'm talking about the LinkedIn, that is for the professionals. If I'm talking about the Facebook, that is for the family. And for Insta and other things, they are having their own objectives. These are the categories. These are the general categories based on their applications, you can say. If I'm talking about the actual IP components categories, and this is the complete diagram of that. I split the complete intellectual property into parts. One is the industrial property and second is the copyrights. And under industrial property, patents. If I'm dealing with the technological part, trademarks, just like you can say logo. If I'm saying this tick mark, anyone can say it's an IP. That is a trademark, that is a logo. Industrial design, that is a, you can say, look and feel, aesthetic. GI, Banarsi sari, Kesar, Pashmina shawl, means the things which are associated with the geographical region of the country. Trade secrets, you can say the compositions, medicine compositions, recipes, or the, you can say, your business procedures as well. And if I'm talking about the copyright, literary work, aesthetic work, drawings, photographs, poems, novels, plays, architectural designs, musical work, or the software side also under the copyright. And today we'll discuss typically for the patents. I think patents are everywhere and cover almost every technology that exists today and would be coming tomorrow. सिर्फ हमें अपने सराउंडिंग, अपने नियर, अपनी सोसाइटी को एक्सप्लोर करने की जरूरत है. दैट्स इट. थिंक फॉर एनी यूजुअल आइटम और टेक्नोलॉजी फॉर विच पेटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन. छोटी सी चीज अपने आसपास देखो कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है. मतलब नो नीड टू आपको एक शेड्यूल बनाना कि आज मैं फ्रॉम 5 to 6 आराम से चेयर पे बैठूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो आप करेंगी क्या? मैं आज ना पेटेंट के बारे में, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचूंगी. नो नीड फॉर ऑल दिस थिंग्स. वी हैव टू जस्ट एक्सप्लोर आवर सराउंडिंग्स. जो मुझे डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है. फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम, ऑब्जर्व दैट प्रॉब्लम एंड थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दैट. जिस चीज को मैं नेक्स्ट अपनी कुछ स्लाइड्स में बताना चाहूंगी यहाँ पर. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअली द कोविड टाइम. जिस टाइम पर पूरा लॉकडाउन लग गया था, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ मार्च 2020. जिस टाइम पर पूरे कंट्री में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एनसीआर में लॉकडाउन था, सारे कॉलेज स्कूल सब बंद. वो तो चीज एक अपने आप में अलग थी, बट लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर वाज देयर अमंग द फैमिली मेंबर्स. आई हैव 2 daughters. मेरी पूरी फैमिली ऑनलाइन पर आई तो हम सब ने ऑनलाइन पर काम करना स्टार्ट किया. बट ठीक है, बीइंग यू कैन से घर में बड़े होने की वजह से हम लोग को मालूम था कि बाहर भी जाना पड़ रहा है. वी हैव टू अरेंज ग्रोसरी आइटम्स एंड अदर डेली यूज आइटम्स, हमें जाना पड़ेगा. बट किड्स वर एट होम, और उस चीज़ में मेंटल वो क्या रहता था कि हम मार्केट से आ रहे हैं, बाई चांस कोई प्रॉब्लम ना हो. एवरी टाइम आफ्टर हाफ एन आवर और 1 hour so we told our kids just to wash your hands, just to sanitize your hands, or please follow this routine. But किड्स तो किड्स होते हैं. दिस इज नॉट अबाउट द किड्स. इवन हम लोगों का भी होता था कि एक घंटे बाद किसको याद रहता है कि हाथ धोने हैं, स्किप हो गया बाई चांस, वो 1.5 घंटे बाद याद आया, या आफ्टर 3 hours मुझे याद आया कि हाँ वही मुझे हैंड वॉश किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. एट दैट टाइम मी अलोंग विद माई टीम वी ऑब्जर्व दैट देयर मस्ट बी सम डिवाइस जिसे मैं मतलब दैट इज अ वियरेबल वन, जिसे मैं जस्ट एक डालूं अपने रिस्ट में, और वो ऑटोमेटिक जो रिमाइंडर वाला काम है ना, वो नहीं होना चाहिए. मतलब बीइंग अ मदर मेरे लिए वो बहुत बड़ी जॉब थी.
हम लोगों ने फिजिबल स्टडी किया कि क्या ऐसी फिजिबिलिटी है कि कोई ऐसी मतलब वॉच हो या कुछ भी ऐसा सी चीज हो, बैंड हो, वो मैं अपने बच्चों के हैंड पे बांध दूं। हैंड पे बांधने के बाद ना मुझे बार बार उन्हें नहीं बोलना पड़े, बेटा इट्स हाफ एन आवर, इट्स 1 आवर, जस्ट गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स और सैनिटाइज योर हैंड, इस टाइप से। उससे क्या हो रहा था, मैं भी इरिटेट हो रही थी, मेरे बच्चे भी इरिटेट हो रहे थे, दोनों इरिटेट हो रहे हैं, तो घर का माहौल भी इरिटेट हो रहा है। उस टाइम पर जब हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी की और इस चीज को मैंने अपने नेबर से, जो हम लोग की सोसाइटी की RWAs की मीटिंग्स होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन मीटिंग्स पर आ गए थे हम लोग कि स्ट्रेस कम हो, चलिए आपस में ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। उस टाइम पर जो मदर्स थी या बाकी लोग थे मेरे सोसाइटी के, उन लोगों से हमने डिस्कस किया। एवरीबडी अप्रिशिएटेड अस। हर किसी ने बोला कि हाँ, अगर इस टाइप का सोल्यूशन होता है दैट वुड वर्क। फिजिबिलिटी स्टडी की हम लोगों ने क्या बोला, हियर यू कैन सी दिस इज अ बैंड। उस बैंड में जो आपका डायल है, उस डायल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जो योर बैंड विल बी फिल्ड विद द सैनिटाइज सोल्यूशन। और उसमें जो आपका डायल सिस्टम है दैट इज समथिंग लाइक, जो हमने अलार्म सिस्टम की बात करते हैं, हम घड़ी में जो अलार्म लगाते हैं, हमने बाय डिफॉल्ट हाफ एन आवर का अलार्म लगाया था, बट वन कैन चेंज दैट टाइम एज वेल। वो अलार्म लगाया, उस टाइम के कंप्लीट होने से जस्ट 2 सेकेंड्स पहले आपकी जो ये रिस्ट वॉच है, ये रिस्ट वॉच आपको एक नोटिफिकेशन देगी, मीन्स द सैनिटाइज सोल्यूशन इज ओजिंग आउट। तो जो आप सपोज खाना खा रहे हैं या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं, कि आप अपने हाथ वहां से हटा लीजिए। उससे क्या होगा, उसने हाथ हटाए, आफ्टर 2 सेकेंड्स जो सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका आपके हैंड्स पर स्प्रे आउट हो गया। इट मीन्स नो नीड टू मेक अ चार्ट कि हाँ मुझे हर आधे घंटे पे काम करना है, ये करना है। तो ये वाली चीज हम लोगों ने जब ये वाली फिजिबिलिटी स्टडी की, वी हैव अप्लाइड for the funding to the National Innovation Founder for the prototype typing, and they supported us, financially supported us for the prototype developing. और in the meantime हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को पेटेंट के लिए इंडियन पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन को फाइल किया, एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द हियरिंग प्रोसेस फॉर दिस आइडिया। एंड करंटली अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोटोटाइप हम लोग सबमिट कर चुके हैं, और फर्दर हम इसे कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए वी आर रेडी फॉर दैट। एंड दीज आर द सम पेटेंट्स फाइल्ड। मैं अगर बात करती हूँ सेकेंड पेटेंट जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पर दिखाया, दैट वाज दैट। एंड फर्स्ट पेटेंट की मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, जो हमने पेटेंट फाइल किया है वो किस टाइप से हमने सोचा। एक छोटी सी चीज आज की डेट में, सपोज कीजिए आज मैं आपसे आई एम इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू ऑन दिस टॉपिक, है ना। उस चीज में क्या होगा, या तो आफ्टर द सेशन आप लोग सर मैम की या सर की जो टीम है वो मेरे साथ इस पर्टिकुलर उसके कंटेंट्स जो हैं या फोटोज हैं वो शेयर करेंगी, या फिर आई हैव टू सर्च फॉर दैट। नो, there should be some, you can say, method or the system। मेरा फेस, मेरा वो एक बार रिकॉग्नाइज किया मेरे फेसबुक ने। सिमिलरली आज फेसबुक में क्या होता है, मैं एक पर्टिकुलर पिक्चर अपलोड करती हूँ, पिक्चर अपलोड करने के बाद फेसबुक क्या बताता है, मैं हूँ, उसने मेरे उस पर टैग किया, इज इट सपना गंभीर और इज इट आसमी गंभीर, माय डॉटर आसमी गंभीर, क्योंकि वो लास्ट उसमें उसको रिकॉग्नाइज कर पड़ा है, क्योंकि वो जो पर्सन है ऑलरेडी फेसबुक पर है, वो सिर्फ मुझसे कंफर्मेशन लेना चाह रहा है। वो चीज मैं टोटल सोशल मीडिया पे चाह रही हूँ। अगर मेरा सोशल मीडिया पर एक फोटो है तो पूरे सोशल मीडिया पर इररिस्पेक्टिव ऑफ विच वेबसाइट इज दैट, अगर मेरी फुल फोटो में कहीं भी पिक्चर है, वो पिक्चर वहां से क्रॉल होकर मेरे पास आनी चाहिए, just for the notification, this is a photo, this is a photograph, this is a picture in which you are there, do you want this picture, if you want you can download, otherwise ignore this is a content tagging। उसका बेनिफिट देखिए क्या होगा, मुझे ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, आज मैंने ये सेशन दिया, मुझे सेशंस की फोटोज चाहिए, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं कि इग्नोर नहीं किया ये सेशन या बैनर पब्लिसाइज हुआ तो मुझे अपने रिकॉर्ड अपनी मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए भी रखना है। नो नीड फॉर दैट, ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल डू दिस। We have applied this method for the content tagging for a patent application actually. And the third one is the systems and the methods for dynamic route selection। This is छोटी सी चीज, all of us are using the Ola Uber।
ये चीज मैंने अपने घर में फेस किया। मेरे घर में क्या है कि मतलब माय सोसाइटी और माय ब्लॉक इज अ गेटेड कम्युनिटी। उस गेटेड कम्युनिटी में क्या है कि 4 गेट्स आर देयर बट ओनली 1 इज ओपन फॉर इन एंड आउट एंड अदर 3 आर लॉक्ड। तो उसमें क्या होता है, जब ओला उबर को हम लोग बुक करते हैं, ओला के अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो उस गेट के थ्रू होता है जो लॉक्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन यू कैन से अप्रॉक्स द 100% ऑफ द टाइम, ओला वाला ड्राइवर है या उबर वाला जो ड्राइवर है उस लॉक्ड गेट के पास आके मुझे ये बोलता है कि मैम ये तो गेट बंद है, अब बताओ मैं कहाँ से आऊँ, क्योंकि मुझे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ दिखा रहा है। माइंड में क्या आया, नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर मैं ये रूट देख पा रही हूँ अपने मैप्स में कि आपका जो ओला उबर ड्राइवर है वो डायनेमिकली कौन सा रूट फॉलो कर रहा है मेरे घर तक आने के लिए। There should be some option. If I know these 3 gates of my society are locked, I can change that, you can say, map or the route manually on that map application. This is a dynamic route selection. And ad hoc social networking and profile matching system is very much related to a computer's background. Something like छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करती हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कंप्यूटर साइंस की कॉन्फ्रेंस अटेंड की। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, लेट अस सपोज द 500 रिसर्चर्स आर देयर, बट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज, सपोज कीजिए, आईओटी एंड मेडिकल इमेजिंग। The one way is just to meet all that 500 persons to check whose area matches with me. This is the one thing. Or the second thing is without using the internet connection. The main USP is without using the internet connection, मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करूं, ऐसा मेथड डेवलप करूं जिसमें मैं जस्ट पर्सन्स को फाइंड आउट कर पाऊं जो मेरे सेम थिंकिंग और सेम व्यूज के पर्सन्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पर्सन्स मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे, उनसे डिस्कस करना मेरी फर्स्ट चॉइस होगा। रीजन, उनका रिसर्च एरिया और मेरा रिसर्च एरिया मैच कर रहे हैं। This is the fourth one, and for this fourth one, me along with my team got the US patent, and we are waiting for the Indian patent on this topic as well. And this particular application again is at very advanced levels of its theory. And if we are talking about the patents, I'm coming to the documents. 2 types of patent applications are there. One is a provisional, second is a non-provisional. आज मेरे माइंड में एक आइडिया आया, उस आइडिया को या तो मैं क्या करूंगी, 6 months के लिए आई हैव टू वेट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट आइडिया। दिस इज अ वन वे। सेकेंड वे इज, मैंने 1 month लगाया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद जितना मैंने एक्सप्लोर किया उसे मैंने पेटेंट एप्लीकेशन की फॉर्म में सबमिट कर दिया, रजिस्टर्ड दैट थिंग, and then now I have approximate the 1 year of time to explore more about that idea. But after that 1 year, I have to submit the complete document related to my idea solution. Means the 2 things are there. One is the provisional, second is the non-provisional. Provisional includes the specifications, drawings, note the claims are required. Claims मैं rights किस particular I explained the complete system in my document. After the explanation part, detailed explanation part, I have to mention in the complete system what is unique at my end, what is unique my thing. I have to claim that unique thing. I have to mention that unique thing under the claim flag. In a provisional application, no need to mention the claims, क्योंकि क्लेम्स कब आएंगे, जब आप उसे एक बहुत डिटेल्ड स्टडी कर लेते हो। बट वंस द प्रोविजनल एप्लीकेशन इज फाइल्ड, यू हैव टू you can say submit the detailed claims within the 1 year of that date, and that complete application is known as a you can say non-provisional application that include the specifications, drawings and claims. एंड अगर मैं जनरल बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल और द लाइफ, दैट इज अ 20 years फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन। और अगर मैं एनफोर्सेबिलिटी की बात करती हूँ, सपोज लेट अस assume one example, like if I am saying, suppose the third one, dynamic route selection, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा अंडर वो है,
यू कैन से अंडर कॉन्सिडरेशन है, मुझे ग्रांट नहीं हुआ है अभी. सपोज कीजिए एनी XYZ, मैं देख रही हूँ मार्केट में एक न्यू आया ओला उबर एंड एक्स कंपनी, एंड दिस एक्स कंपनी इज ऑलरेडी यूजिंग दिस डायनामिक रूट सिलेक्शन कॉन्सेप्ट. फाइन, अभी मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं बोल सकती, मुझे अपनी आइज को बंद रखना पड़ेगा. बट suppose once I grant the patent for this particular idea, तो मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा? I have to check for that X company whether they are having the patent for this concept, क्योंकि वो कंसेप्ट तो मेरा है, पेटेंट मुझे मिल गया है, और वो जो यूज कर रहे हैं पेटेंट, उसको उनके पास पेटेंट अगर नहीं है ना, इट मीन्स वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं. उस केस में मैं उनको लीगली स्यू कर सकती हूँ मार्केट में. बट दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट. वो जो पेटेंट ग्रांट है, आज की सिनेरियो की मैं अगर बात करती हूँ तो द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, टू मच फास्ट. अदरवाइज अगर मैं कुछ साल पहले की बात करती हूँ, मैंने अपने PhD टाइम का जो फर्स्ट पेटेंट था 2009 में सबमिट किया था, और पेटेंट ग्रांट जो वो था मुझे 2019 में ग्रांट हुआ था. और यूएस पेटेंट की, यूएस और सेकंड इंडियन पेटेंट एज वेल, वो पेटेंट्स मुझे आई थिंक 4-5 ईयर्स में ग्रांट हो गए. प्रोसेस जो है बहुत फास्ट चल रहा है. बट जो भी मैं इंफ्रिंजमेंट बाकी चीजों की बात कर रही हूँ, दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, नॉट बिफोर दैट. This is the enforceability from the date of the issue or grant. If I am talking about the patentability criteria in India, कैसे पता लगता है कि पेटेंट हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या फिर जो एग्जामिनर्स हैं वो उन किन पर्टिकुलर कैटेगरीज पर चेक करते हैं whether the idea is novel or not. Or one is the absolute novelty, second is the inventive state or non-obviousness, and the third is the industrial application. Industrial application means very much related to the commercialization. Most of the, this is my observation, जितने भी आपकी solutions, idea solutions आपके objections पर आते हैं, उसमें 80% of the 70% of the cases are there जो कि आपके non-obviousness में फंसते हैं. This is an obvious thing. This is new, not a new thing. This is the obvious one. Means A is equal to B, B is equal to C. Then this is the obvious ना, A equal to C तो होगा ही होगा. This is not a new thing. इसका मतलब एक छोटी सी चीज देखिए, यहाँ पर आपका प्रायर आर्ट की इंपॉर्टेंस आती है. प्रायर आर्ट मीन्स जस्ट टू सर्च द नेट, जो आप सोच रहे हैं. फाइन, अगर सपोज कीजिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा, उस सोल्यूशन को मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया. सर्च में क्या करूंगी? प्रोडक्ट्स, पेटेंट्स, रिसर्च पेपर्स, समथिंग लाइक दैट. फाइन, अब इन सर्चिंग को जब हम सर्च करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर देयर. पेटेंट के अपने डेटाबेसेस हैं, वो आप सपोज कीजिए थॉमसन र्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं या बाकी करें. इवन द फ्री डेटाबेसेस आर आल्सो देयर. अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी की भी बात करती हूँ, सपोज कीजिए लाइसेंसिंग नहीं है हमारे पास उन डेटाबेस को यूज करने के लिए, तो जैसे हमारे रिसर्च पेपर्स फ्री उसमें पड़े होते हैं, आप गूगल स्कॉलर्स पर पेटेंट्स वगैरह को भी फाइल कर सकते, चेक कर सकते हैं. अब चेक करने का एक वे है, छोटी सी चीज, एब्सोल्यूट नोवेल्टी सेज, if I say the three things in my new idea, मैंने एक solution दिया, उसमें 3 चीजें हैं, 3 features are there. The first, absolute novelty says I am searching for a prior art. Prior art means for any document which can have these 3 things collectively. एक डॉक्यूमेंट जिसमें तीनों चीजें हों, अगर है तो इसका मतलब मेरी चीजें न्यू नहीं है, ऑलरेडी दैट आर इन एग्जिस्टेंस, तो आपका पेटेंट नहीं मिल पाएगा. द सेकंड थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन ऑब्वियसनेस और द इन्वेंटिव स्टेट. व्हाट इट सेज, आई हैव मेंशन्ड द 3 थिंग्स इन माय आइडिया सॉल्यूशन. फाइन, बट no one document is there which includes all the 3 things, but 3 documents are there. One feature is in one document, second feature is in second document, and third feature is in third feature document. Means in aggregate, in collective, all the 3 features are in the documents, in a different documents. Again, it means your solution will come under the non-obviousness or the obviousness. That is not an inventive step.
मीन्स मुझे प्रायर आर्ट जो भी ऑब्जेक्शन आती है, फर्स्ट आती है कि आपकी एक प्रायर आर्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अंडर द एब्सोल्यूट नॉवेल्टी, अगर वो एक डॉक्यूमेंट में मिल गया, इट मीन्स योर आइडिया सोल्यूशन जो है वो एब्सोल्यूट नॉवेल्टी को अपोज कर रहा है, उसके अंडर में वो फेल हो गया. सेकेंड इज if your ideas, your features, all three features are there but in different document, it means your idea solution comes under the category of obviousness, the second one. Third one is आपकी आइडिया सोल्यूशन की कमर्शियलाइजेशन है, ओनली देयर इज अ बेनिफिट टू गो फॉर द पेटेंट्स. मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में लेके आओगे, सेम वही जो मैंने लास्ट में बोला है, शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म गेन्स, दिस इज समथिंग लाइक दैट. Inventions non-patentable in India. Simply, any harm to the living being, human, animal, plant, or the aggregation of something. दो चीजें की मैंने aggregate किया and I am saying कि हाँ, this is new. No. Method of agriculture and horticulture. No. Any method to operate for any medical disease. No. You can go for the device, but you can't go for the method for that. These are the few actually. Many more are there. Or you can say any new substance or any new mixture for the collection of substance. Again, that is not patentable. और कोई ऐसी चीज जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, नेचुरल है, you can't go for the patent. These are the patent databases. जैसे मैंने प्रायर आर्ट का some public databases are there. Google Scholar पर अगर आप patents के नाम और वैसे डालेंगे, you can go for that. If I'm talking about the private databases, that is a one, Innography is there, Thomson Reuters is there, LexisNexis is there, and many more. If I'm talking about the third party और या फिर examiners उनकी जनरल में बात करती हूँ, सेम चीज़. अगर मुझे एक IEEE का पेपर या ट्रांजेक्शन का पेपर करना है, तो कई पेपर आपके ओपन में भी होते हैं, बट कुछ पेपर्स मुझे IEEE मेंबरशिप और उस पर करने पड़ते हैं, या फिर कुछ पेपर्स मैं डाउनलोड के लिए पे आउट करती हूँ, समथिंग लाइक दैट. These are the some, you can say, interesting facts related to trademark. That is SRK with the Shah Rukh Khan. Only president to have a patent, that is Abraham Lincoln ji. Pop star having a patent, that is Michael Jackson. And the youngest Indian patent holder, that is Rideshwar Singh Bhati. और इनको अगर मैं बात करती हूँ तो 6 प्लेयर चेस का पेटेंट इन्होंने किया था एट द एज ऑफ 9. And now I would like to discuss few things with all of you, like just a thing. If any of you, this is a Indian Patent Office site, if any of you want to clear anything related to IP, that is a patents, design, trademarks, GI, and other things, no need to go anywhere. Very good, precise, and in very simple language information is there on the Indian Patent Office. मैं जो करती हूँ, अगर सपोज मुझे कि पेटेंट से रिलेटेड ही अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. The complete document is there. The complete document of 25 pages are there. Once you read this document now, lot of doubts will be cleared at your end. So it's better to go through these documents. This is the one way. Even the payments or the process, how can you proceed, and other types of the applications, everything is given there, everything. This is a complete process, or you can say the life cycle and other things. And the second thing which I want to show, just to check for the patents, or just a minute. This is advanced search related to patent. Suppose the applicant name. This is a way to search for the patent, or you can go for the keywords also. I'm writing my name just to search that, and this is a captcha X
I think zero is there, zero or oh, I don't know. Just check it out. With the Sapna Gambhir, this much of the patents are there. Sorry, all these are not mine actually. And here I'm searching for my patent in this. Mm, just a minute. Uh, just a minute. Give me just a minute. I have to take this granted. It would be better. And this is S40GN. This is a captcha. And if I want to go there, then now it will search for the granted patents. And actually, I would like to display the file wrapper, what actually the file wrapper is, and file wrapper for the same, actually. No. Sorry, just a minute, just a minute. I'll go for the applicant name, Sapna Gambhir, that is a granted. And if I'm saying 5RV83, then click on search. These are the granted patents. And this one 581 DL 2099, that is a year. This is my own PhD's paper. And if I want to check the application status for that, this is 2Q4VW, and just enter the submit, click the submit. I don't know why the site is slow today. An error while you request. Just a minute. No issue. This one. Okay. This is the application status. Enter the captcha. This is LGTMG. Here you will see the all documents related to this patent. पूरे 20 मतलब अराउंड द 15 years जर्नी मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मेरी क्या क्या कम्युनिकेशन रही है इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर देयर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, किस टाइम पर कौन सा फॉर्म फिल किया गया, द कंप्लीट फाइल रैपर यू कैन सी. आई डोंट नो व्हाई दिस I don't know. Just a minute. I'll check for this e-register then, just to show you what actually these are. Yeah, this is a e-register. This is the actually detail. The date of apply is 2009, and the date of grant is 2019. And these things are there. And this is actually the as it is granted in 2019. Now every year I am paying for the maintenance fee and something, and these are the details of that. Fine. And this is all these. This is the actually file wrapper. You can see just this is a 2010. From the year 2010 till today, you can say 2020, all the files, all the documents through which I communicated with the Indian Patent Office, all the documents are here. This is a file wrapper actually. Any document you can search for, or you can open it. Basically, like this is a document which I received from the Indian Patent Office for my hearing of this patent.
and this is on date, you can say. These are the details, these are the objections or the observations of the examiner. These are the, and I have to clarify during my hearing for the patent. These details are there, all documents are there, and the hearing date is 19 February 2019. These are the details actually, these are the details. And so this is all about from my side, and I'm available for any discussion or for any topic for which I can say something. Thank you very much, ma'am. It was wonderful hands-on presentation for all of us, and it was a extremely learning time, for all of us, especially in terms of intellectual property. Just wanted to know what is the difference between the trademark filing and the patent filing, because many people get confused. That includes me as well. That is trademark a patent, or is trademark a precursor to patent? Because I have one trademark in my name, so whether that trademark can be used as the substitute for patent? No, sir. Actually, the trademark and patent both are very different, totally different things. If I'm talking about, if I'm saying this tick mark, if I'm saying what is it, this tick mark, everyone can say, ma'am, this is a logo of Nike, no? This is a trademark, sir. But the technology that Nike is using in its shoes, in its apparels, that is a patent actually. No, but then they say, in fact, all the consultants who are doing consultancy in the field of patents and trademark, they say कि patent मिलने में काफी समय लगता है ना? एंड तब तक आप अपने आप को सिक्योर अगर करना है तो इमीडिएटली आप ट्रेडमार्क के लिए कर दीजिएगा, 3 महीने में आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, सो दैट पेटेंट्स का फाइलिंग ना एक धीरे प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल इन सम केसेस इट मे टेक अबाउट 9 to 10 years. सो दे से इन ऑर्डर टू मेक यूजर सेफ कि भाई पेटेंट आपका पहले हो गया है ट्रेडमार्क, तो आप उसके ऊपर क्लेम ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है. तो इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन अगर मिले तो. सर देखिए, जो चीज इतने टाइम से लगा के मिलेगी तो वैल्यू तो देखो उसकी होगी ही होगी, ये चीज जरूर बोलूंगी. इसके साथ मैं अपनी छोटी सी स्टोरी ऐड करती हूँ. जब 2009 में मैंने पेटेंट फाइल किया था, मतलब यू कैन इमेजिन दैट सिनेरियो. मेरे पीएचडी सुपरवाइजर ने या गाइड ने मुझे कहा था कि बेटा पेटेंट फाइल करना है. हमने किया. उस टाइम पेटेंट की मुझे भी नॉलेज नहीं थी. टिल द 2009 मैं खुद एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. टिल 2009 तक मुझे खुद को लगने लग गया था, बाकी देखो लोगों को तो पीयर्स को तो क्या लगेगा कि कभी ऐसा तो नहीं है मैं खुद को उल्लू बना रही हूँ, या 10 साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं उसका, है ना. बट आफ्टर 10 years जब वो एक दिन वो चिट्ठी आई ना, योर पेटेंट ग्रांटेड, तो उस दिन वो वैल्यू पता लगी कि है पेटेंट ग्रांट हो गया मेरा. और जहीं रही बात सर ट्रेडमार्क की बात, आज अगर मुझे कोई शॉप खोलनी है ना, कोई कंपनी खोलनी है अपनी, मैं ट्रेडमार्क करवा लूंगी. वो भी इसलिए कि कोई ना वो ट्रेडमार्क मेरा यूज ना करे, मेरा लोगो यूज ना करे. बट लोग आकर ना आपसे आपका ट्रेडमार्क नहीं मांगेंगे. अगर आपने एक्सपोज कीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली या कुछ भी खोली, आपने वो ट्रेडमार्क करवाया. वो ट्रेडमार्क आप किस लिए करवा रहे हैं कि कोई और कंपनी वैसा सिंबल यूज ना कर पाए. नाइकी ने वो टिक किस लिए करवाया, है ना. ऐसा नहीं है कि आज मैं आके आपसे कहूँ कि सर आपका ये लोगो ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ना अपने बिजनेस में बड़ी हेल्प करेगा, प्लीज मुझे बेच दीजिए वो. बट पेटेंट में जरूर करेगा सर. और उस टाइम पर जब राउंड द टेबल बैठ के डिस्कशन करूंगी ना, जैसे आज का क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज को बहुत बड़ी कंपनीज टेक ओवर करती हैं. वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पेटेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो पेटेंट कंसेप्ट उन छोटी कंपनीज के पास है, बड़ी कंपनीज यूज नहीं कर सकती. फिर वो राउंड द टेबल जब बैठते हैं ना, वो जो छोटी फिशेज होती हैं हमारे जैसी, जैसे कहते हैं हम लोग, फिर अपनी वैल्यू बताते हैं कि मैं बेच तो दूंगा या मैं लाइसेंस आउट कर तो दूंगा, बट इतने मिलियन चाहिए मुझे या इतने बिलियन चाहिए मुझे. दिस इज द डिफरेंस सर. जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. माय प्लेजर सर.
Thank you, Dr. Sapna Gambhir, for that really wonderful session. I would request you to kindly stop the presentation. Yeah, sure, ma'am. Sorry for that. Yeah. So I would like to invite our listeners to give their comments and observations, please. If anybody else wants to add to something or say something about today's talk, today's topic, or ask any questions, you're most welcome. Uh, Good morning, Dr. Das. Good morning, Dr. Nayak. Please go Uh, ahead. Namaskar to everybody. I couldn't be there in the session from the beginning because I had an urgent meeting with the REC people. But I listened. Sir, please unmute yourself. Okay. Since I had a meeting there, I couldn't do that. Let me inform Madam that I have done a course on road to patent creation from IIT Kharagpur, and I could understand a lot of it, but there are so many things which have really remained unexplored. हम चाहेंगे कि हमारे पटना रीजन के बच्चों के लिए मैडम को एक दिन बुलाने के लिए ऑनलाइन ओनली. Anytime, sir. Anytime. Thank you so That much. would be my pleasure. I could see that you yourself have some patents, so that's a great inspiration for all of us. Particularly जो लोग साइंस के हैं उनके लिए तो डेफिनेटली हम तो लिटरेचर के हैं, so it's not that easy, and I don't think there is any patenting for literature. Madam, है कुछ इसे? Sir, actually, I am from technical. I am Okay. from technical zone, so I think I am not the best person to comment on this. Copyright is one of the patenting. Yeah, copyright is not the patent. That's there. But any product, I don't think any product and other things, nothing like that. But it was a wonderful session. Whatever I listened to, I enjoyed it. Thank you very much, ma'am. Looking forward to meeting here in our meeting from Patna someday. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, I would like to say something. Thank you very much, first of all, Sapna ji, for such a wonderful presentation and with so many live examples, and that too of yours. आपके अपने जो examples हैं, आपने किस तरीके से starting किया है for patent filing and then 10 years gap, that is very really, that will give a lesson to all the viewers of this program कि हाँ एकदम से बहुत ज़्यादा impatience नहीं भी हो, because it may take time. बट एक तो बहुत अच्छा ये रहा कि आपने जो अपने पेटेंट्स के बारे में दैट यू हैव गिवन सम डिटेल्स अबाउट द पेटेंट आल्सो, दैट इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग. हाँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ. जो आपने 4-5 पेटेंट्स जो आपने डिवाइसेस बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए आपने उस तरीके के लिए, सोशल नेटवर्किंग एटसेट्रा, तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग. मैं अभी डॉक्टर अभिलाष नायक जी के उससे क्लू ले रहा हूँ, बिकॉज ही आस्क्ड अबाउट दैट पेटेंटिंग ऑफ द लिटरेचर. आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे मान लो लिटरेचर में कई सारी बुक्स का या कोई ऐसी स्पेशल डिजाइन की कुछ देखा होगा आपने कि कुछ बुक्स बनाते हैं, कंटेंट व्हाटएवर कंटेंट दैट इज, आई थिंक दैट विल कम अंडर द कॉपीराइट, नो डाउट. बट इफ दैट इज स्पेशली डिजाइंड व्हाइल इन प्रेजेंटेशन, लाइक जैसे हम कई डायरी को देखते हैं, कोई डायरी जो होती है उनका बहुत स्पेशल डिजाइन होता है, ऐसे किसी बुक्स का भी होता है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एनसाइक्लोपीडिया और जो चिल्ड्रंस की जो बुक्स होती हैं जिनमें के एक डिफरेंट फोल्डिंग पेजेस होते हैं, एंड देन कैन दैट बी कवर्ड अंडर द पेटेंट, आई थिंक, because that is Sir, a product. that will cover under the design application actually. Obviously that particular diary and other thing, actually again the aesthetic of that diary or the look and feel of that diary. Recently along with my team we got that design application for one wristwatch. क्योंकि जब वो कोरोना टाइम में बड़ा हुआ था ना कि ऑक्सीजन का लेवल ये होना चाहिए, बाकी उसका लेवल ऐसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा वो था, तो हम लोगों ने उसे एक्सप्लोर किया. एक्सप्लोर करने के बाद हमें ऐसा लगा कि जितने भी मार्केट में चीजें हैं ऑल आर वर्किंग ऑन द स्मार्ट वॉच, मतलब डिजिटल पे काम कर रही हैं. हम लोगों ने जो डिजाइन एप्लीकेशन फाइल किया ऑन द एनालॉग वॉच किया. एनालॉग वॉच के ऊपर कंप्लीट डायल है, डायल में आपका एनालॉग जो घड़ी है वो तो है ही है, प्लस में आपके 3 वाइटल्स हमने लिए थे. 1 इज द ऑक्सीजन, 2nd इज द ब्लड प्रेशर एंड 3rd वन इज वन मोर.
उसका हमने जो एस्थेटिक और डिज़ाइन किया वो हम लोगों ने डिज़ाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करवाया है। सिमिलरली जो आप डायरीज की बात कर रहे हैं सर, वो भी डिज़ाइन एप्लीकेशन में आएगी। पेटेंट सिर्फ सर टेक्नोलॉजी पे या फिर उस चीज़ पर बात करता है, तभी पेटेंट को मिलने में टाइम भी लगता है सर। डिज़ाइन एप्लीकेशन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ 6 months to 9 months। मतलब मुझे 9 महीने लगे हैं सर वो मुझे मिलने में आपने डिज़ाइन। जो स्पेशल वॉच बनाई, हाँ जी उसकी सर, डिजाइन को आपने बिल्कुल पेटेंट, मतलब एक तरीके वो भी पेटेंट ही है, लेकिन डिजाइन का पेटेंट है। सर। एक्चुअली What is उसको हम that? पेटेंट What वर्ड do you, नहीं यूज what करते, do you हम call? डिजाइन एप्लीकेशन ही वर्ड यूज करते हैं, वेरी एक्यूरेट उसमें। और वो भी हम रजिस्टर करवाते हैं, मतलब Licensing of या something like माय डिजाइन एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड एट दैट टाइम। that's right. या मैम और एक चीज आपने कहा कि जो पेटेंटिंग इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, बट इफ आई करेक्टली रिमेंबर देयर आर सम कंट्रीज वेयर express patenting system is there. Patenting rights are granted to people within 100 days, if I correctly remember. मुझे सर उस चीज में मुझे नहीं मालूम आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं, बट मैं एक जनरल जरूर बोलना चाहूंगी। कुछ कंट्रीज का ये है, इवन मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलती हूँ, वहां पर 2 phases आर देयर, 2 things आर देयर। 2 things का मतलब क्या है, उन लोगों ने क्या किया है, हमारे वन टर्म इज देयर, प्रोसिक्यूशन इज देयर। फाइन, प्रोसिक्यूशन मीन्स आपकी पूरी हियरिंग और एग्जामिनिंग में जाएगा वो पेटेंट। उन्होंने क्या किया है, पेटेंट को वर्ड पेटेंट ही रखा है, बट 2 phases आर देयर। आपको प्रोसिक्यूशन में जाना है या नहीं जाना है। प्रोसिक्यूशन में जाओगे तो उतना ही टाइम लगेगा जितना इंडिया में लग रहा है सर, है ना। वो जो पेटेंट की वैल्यू है वही वैल्यू होगी जो हमारी इंडियन पेटेंट की वैल्यू है। बट फॉर द अदर पेटेंट विदाउट द प्रोसिक्यूशन पेटेंट, वो आपको ये कह लीजिए 5 महीने 6 महीने उनमें मिल जाता है। और उन पेटेंट्स की जो लाइफ है वो भी मतलब आई एम नॉट सो मच श्योर, बट वो 7 years और 8 years अराउंड कुछ थी। और इवन ऑस्ट्रेलिया ने अब उस टाइम पर इसको 2022 में शायद उन्होंने, मतलब जो लास्ट मैंने आर्टिकल रीड आउट किया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम इसको स्क्रैप करने जा रहे हैं, मतलब इसके बाद हम ये नहीं करेंगे। ठीक, थैंक यू। Do we have any other questions or comments? It was a wonderful session of Dr. Sapna Gambhir ma'am, and I, at the outset, on behalf of Regional Center Pune, I thank Dr. O.P. Sharma sir and Dr. Momita Das for organizing such wonderful sessions through their innovative approach, and this Facebook live session on innovation, entrepreneurship, and startup for our students will be a very forthcoming one in a long term way. So I thank you, Dr. Sharma, for giving us this opportunity to listen to such lovely experts. Thank you, Dr. Sonanji. In fact, these all sessions are meant mainly for the regional centers, because they are those who are in direct contact with the students. And we want that these all so wonderful sessions should reach to the maximum number of students. They should get benefit of these all, because these are, I can say, the very rare kind of sessions. We are catching hold of those so many such experts, and we are identifying them, requesting them to share the sessions, and this is mainly for the students. And that work regional centers can do, and you are doing. I know that all the regional centers are very actively engaging students in these all sessions. So that's a very good thing. Thank you very much for being here today and also giving such good feedback and comments. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Dr. Momita, if there is no questions, then I think we can conclude today's session with thanks to Dr. Sapna ji. Yeah, so do we have any other comments or suggestions? So I just wanted to add something to that discussion about literature and patents. Patent drafting is one area where this is very important. The use of literature. If somebody is from literature, English literature, it is very useful. Of course, patent agents and attorneys are there who can draft, but if the English is wrong, then there is a high chance of rejection of that patent, especially in countries outside India. So that is what I wanted to add.
So if there are no more suggestions or comments, I'd like to end the session. I am very grateful to um, I would like to thank our expert, Dr. Sapna Gambhir, for sparing her valuable time to give this inspiring talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNU for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of this session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCID, and my colleagues for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of this program. So this brings us to the end of today's session. Hope to see you next week. Till then, namaste. Namaste. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you.